So if you required, I will share this PDF with you. Otherwise, it is not need. There is no any need to share this PDF. ठीक है, तो ये skip करेंगे. अभी अपना जो original आज का numerical है, we will start with that numerical. ठीक है, चलो. So now next, here also it is asked us to develop only the flexibility matrix for the beam with respect to the coordinates shown below. ठीक है, so यहाँ आपके अभी 3 unknowns आ रहे हैं, so we have to find out the inverse for the 3x3 matrix. ठीक है, तो यहाँ 3 unknowns है. So अपना first step है to find out the static indeterminacy. Now we will count the how many unknowns are here. So 3 unknowns already given. Okay, then यहाँ आपके as a pin support है, so because of pin support 2 unknowns will get generated, so 3 plus 2 will be 5. और यहाँ roller support है तो एक unknown generate होगा, so total unknowns will are 6. So r minus 3, that means 6 minus 3, so total degree of indeterminacy is 3. Okay, so here we will get the degree of indeterminacy as a 3. ठीक है. Now accordingly we will select the which should be the redundant, but for the above numerical already the redundants are given, so we will consider that only. We will continue with that same redundant. ठीक है, so फिर मैं M1, M2, M3 का डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूंगी. तो यहाँ अपन ने कैपिटल M का डायग्राम नहीं ड्रॉ किया क्योंकि कैपिटल M के लिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस है that are not shown on the beam, so we have not drawn that capital M diagram for this beam. Okay, now here we just made a diagram for first redundant, second redundant, third redundant. Our first redundant is moment at 1. This moment at 1. So I will mark this moment at 1 as it is. I will eliminate this from the M1 diagram. This value I will eliminate from the M1 diagram. Accordingly, I generated my M1 diagram by keeping all the support as it is. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Then next we will move forward towards the second M2 diagram. So for M2 diagram, my second redundant is, I mark this vertically downward force as a 2. So for my second redundant, I will keep this on my beam and I will just remove this third and 1 from the M2 diagram. Okay, तो M2 diagram मेरा क्या होगा? Support जिस पे बीम दिया है and only M2 diagram is there. ठीक है, so we will see that M2 diagram. So M2 diagram only support beam और उस पे M2 this two force has been given. Okay, then my third redundant is moment at over here. Okay, accordingly I will just keep this moment and other unknowns I removed from this beam, and accordingly I generate my M3 diagram. Hope you all understood how we have developed these 3 diagrams. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. Thank you. Now we will start analyzing that beam. Analyze क्यों करना है? क्योंकि अपने बीम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है. We don't know the reactions over here. क्योंकि जब मुझे मोमेंट फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ की by का रिएक्शन लगेगा. ठीक है, I will require the reaction of this by. ठीक है, we will see the last numerical. 1 second. This fourth numerical. यहाँ अपन को क्यों नहीं रिएक्शन लगा था? I will tell you that things. Why we not found out the reaction? क्योंकि reactions were the unknowns for us and we mark that with the 1 value. वहाँ वो 1 value से मार्क किए थे. ठीक है, तो रिएक्शन अपन ने 1 value से मार्क किए थे. That means we consider that as redundant. तो जब अपन यहाँ मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली वी हैव अ वैल्यूज ऑफ दैट रिएक्शन एज अ 1 एंड वी हैव अ डिस्टेंसेस, सो देयर इज नो एनी अननोन. ओके, ऑन द beam which are having with the applied load. But in this our case, यहाँ क्या हो रहा है अभी? See, these are the reactions. R1, RB या RA are the reactions, but these are not the redundant. ये redundant नहीं है, तो इनके कुछ unknowns values है. ठीक है, that we are not aware about that values. अपने redundant क्या है? 1, 2 and 3 है. We have only to choose the redundant, and already in the numerical statement itself they have given that, so we have to consider these 3 are the redundant and accordingly we have to generate the flexibility matrix. ठीक है,
तो यहाँ भी रिडंडेंट चूज करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, सो डायरेक्टली दिस विल बी दी अननोन्स फॉर अस, सो वी नीड टू फाइंड आउट दीज अननोन्स टू गेट द मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ अगर मुझे मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे ये अननोन्स चाहिए, इसीलिए मुझे ये बीम्स को एनालाइज करना है जो अपन ने प्रीवियस न्यूमेरिकल में नहीं किया था। होप यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, only 2 responses I Yes, ma'am. Yes, ma'am. got. Okay. Using this moment at A equation, I will get B by value as a 0.25 kilonewton. ठीक है? Then I will use second equilibrium equation, that is summation of Fy. ठीक है? After solving that, I got the value as a minus. तो ये मेरा Fa डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ठीक है? Similarly, I analyzed M2 diagram also. M diagram पे मेरा बस point load था, ओके? तो मुझे अभी यहाँ भी by and ay फाइंड आउट करना है फॉर द पॉइंट लोड। प्रीवियस केस में अपन ने फाइंड आउट किया फॉर द मोमेंट लोड, यहाँ अपन फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द सेकेंड रिडंडेंट फॉर द पॉइंट लोड। तो फिर से मैं मोमेंट एट ए ले लूंगी। सो व्हेन आई विल टेक अ मोमेंट एट ए, सो RB will be the reaction that I will get from that equation. Okay, so यहाँ मुझे by का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, या पूरा ये कैसे आया एक्सप्लेन करने की जरूरत है? No, ma'am. नहीं मैम। ओके ओके ओके, तो आपको ये डायरेक्टली by का यहाँ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देन after getting this by value, ay is unknown, so I will use summation of fy equation to get the value of by. So ay plus by minus 1 will gives me, one second, will give me ay value, that will be a minus 1. ठीक है, तो ay का वैल्यू यहाँ भी -1 आया है, माइनस में आया है। देन फॉर द नेक्स्ट M3 डायग्राम, for M3 diagram. So for M3 diagram, I will consider this third as a redundant, moment at C as a redundant. Then I will take a moment at A. So when I will take a moment at A, then RB value I will get from this equation. Okay, and that RB value is 0.25. Then next is to get the AY value, I will add some, I will use the equation of summation of Fy and accordingly I will get AY value again as a minus. ठीक है, तो अभी यह सारे बीम को अपन ने एनालाइज किया है। देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ टेबल। सो इन टेबल वी हैव अ 2 members, member BC and member, I will show that complete diagram. Okay, this AB and BC. ठीक है, now I will consider member BC and C as a origin, and for member AB B as a origin. ठीक है, तो AB के लिए मैं B origin कंसिडर करूंगी and BC के लिए मैं C origin कंसिडर करूंगी. So C and B are the origins. So here C and B are the origin. So for BC, C is the origin, and for AB, B as the origin. ठीक है, and the limit for this BC is from 0 to 4, and same way for the limit for AB is again for 0 to 4. Now we will analyze for M1 diagram. Okay, ये दोनों भी member पहले अपन M1 diagram के लिए analyze कर लेंगे. So for I will see that M1 diagram. Yes, this is my M1 diagram. So I will take a section over here at a distance x from the C support. ठीक है, तो यहाँ मेरा section आएगा for my BC member. Then I will find out the moment at this section. So there is no any external load is on this beam. So मैम नहीं ना, ठीक है, समझ में आया ना? हर जगह आपको 1 कंसिडर करके ही उसका मोमेंट को एनालाइज करना है। यहाँ भी मैंने 1 कंसिडर किया है, अकॉर्डिंगली आई एनालाइज दैट बीम। हियर आल्सो आई कंसिडर दिस एज अ 1 एंड अकॉर्डिंगली आई एनालाइज बीम। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी विल मेक अ टेबल। तो टेबल में जैसे मैंने बोला, ये अपन ने ये देख लिया। नाउ वी विल सी हाउ टू जनरेट दिस M1 डायग्राम फॉर बोथ द मेंबर्स। ठीक है,
Now, as we have seen that M1 value for this BC is 0 because there is no any external load at a distance of x from the C support. ठीक है, तो यहाँ 0 value हो जाएगा. Now we will see for the AB member and we consider the B as a origin. ठीक है, and M1 के लिए ही देख रहे हैं. For M1 B as a origin, so I will take x distance from the B. ठीक है, here I will find out the moment. तो यहाँ मोमेंट मुझे फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स I can find it from the left hand side or I can find out it from the right hand side. But usually for every member I am finding it from the right hand side to avoid the confusion. So I am maintaining the same method or same procedure. तो मैं यहाँ भी right hand side से find out करूँगी. ठीक है. So if I will take a section over here at a distance of x from the B support, so how many forces will generate the moment over here? यहाँ मैं लाइन ही ड्रॉ करती हूँ. तो यहाँ ग्रीन लाइन तक कितने कौन से फोर्सेस मोमेंट क्रिएट करेंगे? सो द फर्स्ट इज द बी वाई फोर्स विच विल क्रिएट द मोमेंट एट दिस सेक्शन. ओके, so this by which is creating a sagging moment, so by into 4 and this will be with the plus sign. So by into 4 and which will be the with plus sign. ठीक है, तो by का वैल्यू कितना है अपना? So 0.25 है. So 0.25 into x, not 4, sorry, 0.25 into x will be our equation. ठीक है, so here our equation is 0.25 into x. Hope you understand this equation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now next we will move towards the next M2 diagram. Okay, now we will find out the moment created because of M2 diagram for this both the member, for AB member and for BC member. So for my M2 diagram, हाँ ये वाला M2 diagram है. So for my BC member, as I consider C as a origin, so I will take a section over here at a distance of x from the C support. Now I will find out the moment for this force. So this will create a hogging nature and value of this force is a 1. So 1 into x will be the moment at a section xx for the beam BC. M2 diagram का M2 diagram का beam BC and it is minus 1x. Okay. Then for next ABB. Now we will find out M2 diagram में ही है अभी तक अपन. So M2 diagram के लिए BC के लिए find out करूँगी. So BC के लिए I considered the B as origin. So at a distance of x from the B, I will take a one section and we will find out the moment over here. Okay. Similarly, I will find out the moment from right hand side also, right hand side only. तो यहाँ this force by force will create a sagging nature. ओके और उसका वैल्यू है 2 into x will be the moment 2 into x minus 1 into 4 plus x. Okay, so see 2 into x minus 1 into 4 plus x will be the moment created at the AB panel. Okay, you understood this for M2 diagram? Yes, ma'am. Okay, thank you. So everyone has understood these two values how we have got for both Yes, the ma'am. members. Okay, thank you. Yes, now we ma'am. will find it for the M3 diagram. So for this M3 diagram, now we will take a now we will go for the M3 diagram. We will take a section over here, okay, at a distance of x from the C support, and I will find out the moment at this section. So this is creating a hogging nature, okay, and this only a moment. This is a moment, so I will not again going to multiply it with the x. So ये 1 as it is आएगा with the minus sign, okay. So for BC के लिए आएगा 1 with a minus sign. हाँ -1, ठीक है, क्योंकि वो मोमेंट है तो उसको फिर से x से मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है. Now next we will find out it for the next member. So I will take a section over here at a distance of x from the B support and I will find out the moment at this section. ठीक है, तो यहाँ भी मोमेंट कैसे आएगा? by is of a plus, it is with the plus, that means it is of a upward nature, it is creating a sagging nature. So 0.25 into x plus minus 1.
So 0.25 into x minus 1 will be the moment created on the AB panel. ठीक है, तो ये टेबल समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now once we form the table, then we will find out the flexibility matrix. ठीक है? So flexibility, we have a 3 unknowns, that means 3 redundant over here. So we will generate the flexibility matrix of a 3 by 3 size. ठीक है? So our first coordinate is F11. So for F11, I have not mentioned the equations over here. So I will multiply M1 in multiply again it with the M1. So it will become M1 square. Okay. So M1 square means M1 का first term will be 0. So no need to take that term. So I will directly switch towards the second term. So M1 का ये term आएगा 0.25x whole bracket square. ठीक है. So limit is 0 to 4. So whole bracket square, तो यहाँ डायरेक्टली मैंने स्क्वायर करके डायरेक्टली किया हुआ है, तो अभी इसका स्क्वायर आएगा 0.265 एंड एक्स स्क्वायर, देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3. वो ब्रैकेट को 0 to 4 तक लिमिट एंटर करना है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एंटरिंग द लिमिट ऑफ दिस ब्रैकेट, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस F11 एज 1.33. ठीक है. Similarly, we found out it for the F22. तो F11 का कोऑर्डिनेट अपन को मिला. अभी we will find out it for the F22. तो F22, so to get the value of F22, we have to multiply M2 with M2. So that means it will become a M2 square. तो यहाँ मुझे ये दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है. by squaring these both the terms, I have to integrate it from 0 to 4. Okay? So ये दोनों टर्म को मैं यहाँ अभी स्क्वायर करके इंटीग्रेट करूंगी. मैंने ये लिखा है, हाँ, थैंक गॉड, ये तो लिखा है मैंने. ओके. सो यहाँ एक्स स्क्वायर, आफ्टर स्क्वेयरिंग दिस विल बिकम अ प्लस. ठीक है. 1 का स्क्वायर किया, कहाँ गया टेबल, हाँ, 1 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर किया, सो -1 विल बिकम अ +1 एंड एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज. सो अकॉर्डिंगली आई मार्क दिस ओवर हियर. देन आफ्टर दैट ये पूरे टर्म को मुझे स्क्वायर करना है. सो फॉर होल 2 minus 1x will be 1x. So directly मैंने ये simplify किया है, इसको simplify किया है. So minus x plus 2x will become a x, means 4 plus x will be the bracket over here, and I will square that bracket over here, minus 4 plus x. Okay. And after squaring and entering the limit, I will get the value of that F22 as 42.6. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So for next, आपका next lecture कब है? 11:30 ना? Yes, ma'am. Okay. So we just left with some term. We'll complete that. So our flexibility matrix will get complete, and our numerical is up to find out the flexibility matrix. ठीक है. थोड़ा सा जल्दी लेती हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो. So now F33 कैसे मिलेगा? By multiplying this M3, multiply again it with the M3. So that means M3 square will gives us a value of F33. ठीक है. तो F33 का जो M3 का है values -1, and this term we will integrate it from 0 to 4. ठीक है. -1 का स्क्वायर करेंगे, it will become a 1 only. So यहाँ 1 only 1 आ जाएगा, and उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x term will get entered over here, and after that this bracket I will simplify it, and after simplifying that whole equation we will get F33 as a 5.33. ठीक है. Then the remain non-diagonal coordinate. So we will find out that non-diagonal coordinate 1 3 and 2 3. ठीक है. ये non-diagonal and 2 1 भी बचा है. ठीक है. So 1 3, हाँ. So 1 3, that means we have to multiply it with M1 into M3. ठीक है. So after multiplying these two terms, M1 and M3, so M1 and M3, so M1 and M3 in the first BC member, 1 is 0, so no need to take that value. So directly we will move towards the member AB. So we will multiply this term with this M3 term. ठीक है.
So after multiplying and simplifying that terms, अब यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अपन m1 को m1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे या फिर m3 को m3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बट वी आर मल्टीप्लाइंग m1 with m3, and accordingly after simplifying these terms and after integrating that terms we got some values over here and that values are minus 0.67. ठीक है, एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं ना, यहाँ तक इतना एक्सप्लेनेशन काफी है फॉर टू गेट द वैल्यू ऑफ M13. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now, okay. I will share this PDF with you. ठीक है, if you have any doubt, you can ask me in the next lecture. Then similarly, we found out it for the F23 या फिर F32. So F23 के लिए, see F2 and 3. So both integration will come. Both members integrations will come. So ये multiply करके plus हो जाएगा, x हो जाएगा, and then these two multiply करेंगे and will give the limit from 0 to 4. Okay, so we will get the value as a 13 कहा गया 23 ना, we were at कौन सा कर रहे थे अपन, 23 ना. Yes, ma'am. Yes, 23. So for F23, so for F23, so first term will become a plus and the second, both these bracket we multiplied with each other and we simplified that, and after integrating we just enter the limit values in that integration. So after simplifying that whole equation we got the value as F23 and 32 as a 13.33. ठीक है, then last term is of 1 2. So we will find out it for M2. So we will multiply M1 and M2 terms together. So here in the table M1 and M2 terms, so M1 is 0. Okay, so the first term will get eliminated, but in the second term it will be 0.25x and this second bracket. So that both we will multiply with each other and we will simplify that after multiplying, after simplifying, and just enter the limit values in that term. So we will get the F13 मैट्रिक्स over here. ठीक है, और लास्ट का भी वैसे ही करेंगे, अभी लास्ट का मैं भी नहीं एक्सप्लेन करती, सॉरी ये 1 2 था, ये था अपना, वो भी वैसे ही करेंगे. एंड अकॉर्डिंगली वी जनरेटेड दिस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. होप यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट कंसेप्ट बिकॉज आई जस्ट मूव्ड फास्टली और आई जस्ट कवर्ड इट फास्टली. तो उसमें इंटीग्रेशन ही निकालना है, नो अदर पार्ट इज, नो मींस एक्स्ट्रा डिफिकल्ट पार्ट इज गिवन ओवर हियर. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स.